see the prospects of your party allying with the BJP at some point in time in the future because there is ideological affinity still because of the Hindutva rubric, or do you think that door is now shut? Look, our Hindutva is very clear. दो तीन चीजें हैं, हम मराठी में कहते हैं हृदयत राम हाथाला काम. दिल में राम है लेकिन हाथ को काम दीजिए, एम्प्लॉयमेंट तो दीजिए. दूसरी चीज हमारी साफ है, हमारा हिंदुत्व रेपिस्ट का स्वागत नहीं करता. रेप किसी का भी हो, फिर बिल्किस बानो का हो, किसी का भी हो, धर्म जात पात नहीं देखते हम. रेपिस्ट का स्वागत हमारे धर्म में नहीं करते. कोई आप कलर पहने उस पे हम किसी को जलाते नहीं, कुछ खाए उस पे हम जलाते नहीं. हमारा हिंदुत्व साफ है और हम उस हिंदुत्व की राह पे चल रहे हैं. और हमारे हिंदुत्व में ये बार बार दोहराता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए. जो वचन हम अपने साथियों को देते हैं, जो वचन अपने दोस्तों को देते हैं, वो नहीं तोड़ते. जब उन्होंने हमसे युति तोड़ी थी 2014 में, तब भी तो हम हिंदू थे. अलायंस उन्होंने तोड़ी थी. आज भी हम हिंदू हैं, लेकिन आज तो पार्टी फोड़ी है उन्होंने कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है. उनकी तो पार्टी फोड़ी, उनकी तो परिवार फोड़े. ये हिंदुत्व हमारा नहीं, हमारा हिंदुत्व अपना हिंदुत्व है, हम उसको लेके आगे चलेंगे. हाँ, लेकिन एक जस्टिफाई करें तो बात कर सकते हैं, जिसका विरोध हमने एज एनडीए तब किया था, जीएसटी का हो, आधार का हो, न्यूक्लियर डील का हो, आज तो सब ही ओके कर रहे हैं. आज तो सपोर्ट करें तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? फ्यूल की प्राइसेस हमने तो तभी कहा था बहुत हुई महंगाई की मार. आज महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है सरकार से. जो सरकार के खिलाफ पहले थे आज तो जस्टिफाई करने जा रहे हैं. तो ये अगर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं तो देखिए. How do you respond to the criticism from the core Hindutva voter or supporter that the Shiv Sena of Aaditya Thackeray and Uddhav Thackeray is a very pared version of the original firebrand Shiv Sena of Balasaheb Thackeray? That this is a more sophisticated South Mumbai version of an urbane Sena rather than the rough and tough Shiv Sena of your grandfather. And that's why the original Shiv Sainik on the road sometimes doesn't identify with the sophistication of an Aaditya Thackeray. I think that is absolutely a wrong feedback. हम भी तो वैसे ही कहते कि जो हम भाजपा के साथ दोस्त थे, वो वाजपेयी साहब की भाजपा थी, अडवाणी साहब की भाजपा थी, मुंडे साहब की भाजपा थी, महाजन साहब की भाजपा थी. आज देखिए महाराष्ट्र भाजपा के कौन से चेहरे. तो ये इस नए भाजपा के साथ हम आइडेंटिफाई नहीं करते. अच्छा, राम मंदिर का भी अगर मामला हो, मसला हो, तो नवंबर 2018 में जब सब केंद्र सरकार भूल चुकी थी राम मंदिर को, हमने उठाया मुद्दा. केंद्र सरकार ने ये नहीं लाया, ऑर्डिनेंस नहीं लाया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो केंद्र सरकार का क्या लेना देना है राम मंदिर से? तो ये बात जो हम करते हैं वो करते आए हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा हिंदुत्व जो है हृदयत राम हाथाला काम, ये हम करते रहेंगे. So when you have an India Alliance meeting, can you share with everyone sitting here some of the conversations? So say amongst Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, Akhilesh Yadav, Stalin, who are you most impressed by? कौन लगता है कि यार ये आदमी smart है, या ये नेता में दम? We were sitting here only for the India Alliance and I'm 100% sure that the government must have bugged it. So if you figure out some bugs here, आपको सुनाई देगा क्या conversation था. सर वो गवर्नमेंट ने बग किया ना, हमें तो नहीं पता कि बगिंग में क्या निकला. आप हमें बता मिल जाएगा आपको. अरे हमें कहाँ से मिलेगा? पूछ लीजिए, आज दोपहर को आएंगे तो पूछ लीजिए. आप नहीं. No, why don't you tell us? Do you think Rahul Gandhi, for example, would make a good prime minister one day? I think what is important is here, nobody is saying that I want to be the prime minister. It's all about we the people of India. I think that is very important. Again, see, I'll tell you, I'm not giving a political answer, I'm not giving a diplomatic answer. I have great friendships with everyone here. And we had friendships with that generation of the BJP too. And I strongly believe that we have to move beyond political vindictive behavior. We have to move beyond enmity to having political ideological differences, but you cannot take it off the field. What has happened today is having an ideological difference is being an enemy of each other. That is the problem today. Within India, if you speak to any one of them, everyone's willing to cooperate, everyone's willing to take one step forward or one step backward for our country. Everyone realizes that our country faces a true danger to democracy. Because the BJP and its supporters would argue the only thing unifying you is anti-Modiism. That there is no cogent ideology or format for governance that unites you. You're only united by the fear of Modi coming back to power for the third time. I'll make it very clear, we're not against the Prime Minister, we're not against any individual. We're against the ideology that only one voice, and again, one voice by meaning that I'm not saying it's the Prime Minister or one person. One voice or one thought will run the country. There has to be a consensus. The idea of coexistence
is important to a country. The idea of unity and diversity is important to a country. The idea that a Bengal can voice what it wants, Kashmir can voice what it wants, Gujarat can voice what it wants, Maharashtra will voice what it wants, Kerala can voice what it wants, is very important. And find me, the consensus for what's best for a country will happen. Imposing one on another is what we are against. And the idea of dictatorship is what we are against. There seems to be some back channel conversation with your uncle Raj Thackeray. Is there a possibility that he could come back to the party From whom? fold? I'm just trying to understand from you. नहीं, but back channel of ऐसे ही मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ तो मेरे को लगा कि नहीं, ये न्यूज में मत बिलीव कीजिए आप. जो है उस पे बिलीव करते हैं, अगर मगर पे नहीं चलते. नहीं चाहिए अंकल. नहीं, मैंने नहीं कहा कि कोई चाहिए नहीं चाहिए. मैं कहता हूं कि अगर मगर पे हम बातें नहीं करते, जो है उस पे करते हैं. I didn't understand, sorry. यानी Let me reframe my ifs and question. buts पे नहीं जाते हैं. Let's go on No, what so is. Let me reframe this question. Are the doors of your party open to a possible rapprochement with Raj Thackeray? Would you like to have him back either as an alliance partner or welcome back to the family fold? Look, once again I've said this, and I think we've said this in 2013 also. It's exactly a decade to this, because I remember, now we'll have to figure out what our conversation was back then. But I think what is very important is, to us as a family, we consider family of anyone who stayed with us, with my father, with my grandfather, with our party for the last whatever years. So anyone who's here who stayed with us for as many years as possible in our thick and thinnest times, and in our flows and ebbs and all of that, high tide, low tide, I think they are family for us. That is why blood is thicker than water, and our blood is in them, their blood is in us, and I think that is what we believe as family. तो गए नहीं मैं चाहिए नहीं कहता हूं, मैं यही कहता हूं कि जो साथ में है वो अपने उसी को लेके आगे जाना है, देश को आगे लेके जाना है. इंडिया में अगर आप देखें तो काफी सारे ऐसे पार्टीज भी आ रहे हैं जो पहले हमारे बारे में कुछ अलग सोचते थे, हम उनके बारे में काफी अलग सोचते थे, लेकिन देश के लिए अगर साथ आ रहे, राज्य के लिए साथ आ रहे, अपने अपने राज्य के लिए साथ आ रहे, तो आगे लेके जाते हैं.